not an easy film to make. I needed a burnt theatre. So मैंने लिखने में तो बहुत easy लगता है. मैंने I still dread the fact मैंने लिखा एक burnt theatre. लाएगा कहाँ से burnt theatre? It was good. क्या होता है कि I come from no school. So till I was I think 16, 17 मेरा कुछ theatre से भी ना कुछ relation था ना cinema से था. So somewhere I feel like I needed to tell those people कि yes, basic education is a must, but then you should have a will to succeed. और मैंने कहाँ से सीखा? मैंने कोई स्कूल में नहीं गया, ना मैं कोई फिल्म स्कूल में गया. मैं थिएटर किया when I was 17, मैंने वर्कशॉप किया पहले. So I think at the end of the day, life is the biggest teacher. What you learn from life, nobody can teach you. अभी technically, definitely, you get to know a lot from institutes, but basic जो सीखना है, वो तुम्हें कोई institute नहीं सिखा सकती. Yes. That you need to look around you and look within you. जिंदगी से वो अपने आप में भी झाँको तो तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है. Like I don't know, जब भी मैं थिएटर करने का तभी ये नए सब सीख के आए थे, तो सब डॉस्टोव्स्की, स्टानिस्लॉवस्की नाम सुन के भी मेरी ऐसे फील ये क्या है, ऐसे फील ये तो मुझे आता नहीं. बट देन स्लोली आई रियलाइज कि दैट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट. वो एट द एंड ऑफ द डे गिवन अ सिचुएशन को तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे. इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नॉट सीन लाइफ, यू कांट. इफ आई हैव टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन वेयर there is I see a man who is not eaten for 10 days. So if I have not seen anything, ये मुझे सिखाता नहीं, ना स्टैनिस्लॉवस्की सिखाता है, ना डॉस्टोव्स्की सिखाता है. ये मैं कहीं पे I recollect. So what you need to do is observe. तुम्हारी आंखें खुली रखोगे तो वो सबसे बड़ा टीचर है. And somewhere more than talking to them, I wanted to see their energy also. क्योंकि क्या है ये मेरा कंपटीशन है. आई टेक देम वेरी वेरी पर्सनली. ये मेरा कंपटीशन क्योंकि आई डोंट लाइक टू गिव एन एज, बट देन आई नो कि they have all the हथियार. So I would really, it was a really nice experience trying to see the future of Indian cinema. And मज़ा है, बहुत मज़ा है. और I just hope sometimes कि भी हमारे टाइम पे ऐसा हुआ तो sometimes you feel jealous also. You could have heard so many people. Today, when I work with Nana, I know Nana, but then I know Amitabh Bachchan. But then there are so many people who can enlighten you. आज मैं नाना की बातें सुनते थे, I felt like as a youth, if I had to listen to so many things, it would have helped me in life, definitely. But let us not cry or spill milk. But the experience was very, very enriching. Yeah. Manish, talking about Natsamrat, first big blockbuster of the year. How do you, both of you, look into it? किस तरह से फिल्म बनी और बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया फिल्म में? Expect the commercial as well as लोगों को आपकी पसंद भी आई थी. No, but you'll be surprised कि when I decided that I want to do Natsamrat, people started avoiding me like the play because see they had seen the play. At the end of the day, when you adapt theatre, they didn't know what was मेरे स्क्रिप्ट में क्या था. So they were just waiting कि बनने दे फिर देखेंगे. कि थिएटर तो बहुत देखा है लोगों ने. It has been seen by so many people. तो सिनेमा कौन देखने आएगा? But then I knew when the script was made, somewhere I knew कि I have a winner on hand. The only problem was I had to convince someone who was going to put in money, and I'm very fortunate कि मुझे विश्वास जोशी जैसे एक प्रोड्यूसर मिले, because it was not an easy film to make. I needed a burnt theatre. So मैंने लिखने में तो बहुत easy लगता है. I still dread the fact मैंने लिखा एक burnt theatre है. लाएगा कहाँ से burnt theatre? So we had to make a theatre and burn it, and then shoot there. एक ब्रिज के नीचे रहता है, तो today shooting under a bridge with Nana Patekar is next to impossible. And there were day scenes, night scenes, सब था. So erect that bridge. तो nowhere did the producer falter. No, किसी बताया नहीं उसने मेरे को कि यार इतना खर्चा क्या करेंगे. And for a Marathi film, the budget was nearly 2.5 times the normal Marathi film budget. But then I think once we saw the rough cut, हम जानते थे कि we have got a winner on our hands. Zee का आना बहुत बड़ा contribution था. They really took it to the masses. They know how to market film. But then at the end of the day, only marketing doesn't help. So and there was a connect. क्या होता है, लोगों ने बताया कि नटसम्राट old है, कौन देखेगा, youth. But I think there was a lot of youth who saw the film. What happens if we today underestimate the youth?
Today the youth is exposed to so much कि you don't need to tell them, you don't कि ये जो कोई सोचता ना कि I'm making a film ये youth के लिए बना रहा हूँ, they are the biggest morons. Yeah. Because the youth knows what is right for them, what is wrong for them. Don't try to categorize. So somewhere I think everybody contributed. Everybody, actors, my set designer, my music composer, my cameraman, everybody was there. They were spot on. So that is the reason हम लोग ने सोचा था, मैंने कहा था 45 days लगेंगे शूट के लिए, मैंने शेड्यूल ही बनाया था 45 days का. नाना बोला नहीं 60 दिन के नीचे एक दिन लगेगा, तो मैंने ठीक है देखेंगे. And before we knew it, we had finished the film in 36 days. Wow. So वो also everybody was charged. And then I don't know whether I thought there will be interaction with the audience. What happens is sometimes we had everything bound. Script एक बहुत बड़ा advantage देता है. It's a huge advantage. I mean, there are some changes you do in a script, but having a bound script is the best thing to do. बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमने सीन लिखे रहते हैं, will improvise नहीं होता. Improvise भी होता है कभी कभी. But when you say कि everything, you have basic 90% of the script should be there, and वो बहुत contribute किया towards the success. Nana sir, would you like to add something? नहीं, मेरा काम तो हो गया था ना, फिर ये प्रोड्यूसर का काम था पैसे गिनना. मेरा क्या था, मेरे पैसे तो दिए थे उसने. और पैसे से ज़्यादा एक इतना कुछ करने का मौका मिला. सो मुझे सभी जो रेम्यूनरेशन था वो पहले ही मिल गया था. तो मेरे लिए तो फिल्म पहले ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, क्योंकि इमोशनली मुझे जितना करना था एज एन एक्टर वो तो मुझे मिल गया था. सो आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द बिजनेस.